نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. برعان علي أولاد علي محمد وآل محمد صلوات. शबीर तेरी गुरबत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती. शबीर तेरी गुरबत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती. शबीर तेरी गुरबत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती. कौसर के तुझे चिंते देती ज़मज़म से तुझे नहला देती. कौसर के तुझे चिंते देती ज़मज़म से तुझे नहला देती. शबीर तेरी गुरबत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती. शबीर ये देश पराया है वरना मैं तुम्हारी मैयत पर. शबीर ये देश पराया है वरना मैं तुम्हारी मैयत पर. अंबार लगाती कलियों के फूलों की मैं बरसा देती. शबीर तेरी गुरबत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती. शबीर तेरी गुरबत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती. ए भाई तुझे मालूम तो है रस्सी में बंधे थे हाथ मेरे. ए भाई तुझे मालूम तो है रस्सी में बंधे थे हाथ मेरे. वरना मैं तुम्हारी मैयत पर
चादर का कफन पहना देती। शबीर तेरी गुर्बत की कसम, मैं लाश तेरी दफना देती। शबीर तेरी गुर्बत की कसम, मैं लाश तेरी दफना देती। कासिम का बदन, अकबर का जिगर, अब्बास का बाजू ओन का सर। कासिम का बदन, अकबर का जिगर, अब्बास का बाजू ओन का सर। अब कुछ भी नहीं है झोली में, होता तो तेरा सदका देती। शबीर तेरी गुर्बत की कसम, मैं लाश तेरी दफना देती। शबीर तेरी गुर्बत की कसम, मैं लाश तेरी दफना देती। ए भाई तुझे मालूम तो है, रस्सी में बंधे थे हाथ मेरे। ए भाई तुझे मालूम तो है, रस्सी में बंधे थे हाथ मेरे। वरना मैं तुम्हारी मैयत पर चादर का कफन पहना देती। शबीर तेरी गुर्बत की कसम, मैं लाश तेरी दफना देती। शबीर तेरी गुर्बत की कसम, मैं लाश तेरी दफना देती। कासिम का बदन, अकबर का जिगर, अब्बास का बाजू ओन का सर। कासिम का बदन, अकबर का जिगर, अब्बास का बाजू ओन का सर। अब कुछ भी नहीं है झोली में, होता तो तेरा सदका देती। शबीर तेरी गुर्बत की कसम, मैं लाश तेरी दफना देती। कौसर के तुझे चिंते देती, जमजम से तुझे नहला देती। शबीर तेरी गुर्बत की कसम, मैं लाश तेरी दफना देती। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आज की रात तुझे
गोदी में सुला लो मेरे असगर राजा। आज की रात तुझे गोदी में सुला लो मेरे असगर राजा। लोरी अरमानों से भरपूर सुना लूं मेरे असगर आजा। आज की रात तुझे गोदी में और तीर के आगे मेरे लाल तुझे होना है। देख कर तेरी हंसी जुल्म ने भी रोना है। जो तरीक़े खैर लड़ाई के सिखा दूं अरे मेरे असगर आजा। आज की रात तुझे गोदी में तुझको एक बार दफन बाबा तेरे कर देंगे। फिर तुझे नेज़े सकीफ़ा पे वहाँ ढूंढेंगे। दश्त की गर्म हवाओं से छुपा लूं मेरे असगर आजा। आज की रात तुझे गोदी में तेरी मासूम सकी ना को पिला के पानी कल तेरी प्यास बुझाएगा अली का सानी। मैं तुझे देख के प्यास अपनी बुझा लूं अरे मेरे असगर आजा। आज की रात तुझे गोदी में सुला लो मेरे असगर राजा। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो। कैसे परे हैं जिस्म के कैसे परे हैं जिस्म के टुकड़े जुदा जुदा। अरे क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से खै खै मेरे गरीब का
क्या हाल कर दिया, ख़ै ख़ै मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया। घोरों से लाशा दश्त में पामाल कर दिया। पहचानूं किस तरह से बदन से है सर जुदा रे, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से और करता रहा है ज़िब्हा की कोशिश कहाँ कहाँ। खंजर पे है कटी हुई, गर्दन पे भी निशान। काटा काटा है किस तरह से, अरे सितमगार ने गला। अरे क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। कैसे परे हैं जिस्म के टुकड़े जुदा जुदा, अरे क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। तुरबत से अली असगर की, तुरबत से अली असगर की आवाज़ ये आती है। ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। याद आए बहुत मुझे को तेरा झूला झुलाना, याद आए बहुत मुझे को तेरा झूला झुलाना। कभी सीने से लगा के तेरा
लोरी सुनाना। जब रेत गरम प्यारी माँ, जब रेत गरम प्यारी माँ मेरे तन को जलाती है, ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। हाय प्यास की शिद्दत से गला सूखा पड़ा है जख्मी गला उस में माँ दर्द खड़ा है। तुरबत में अकेला हूँ मैं, तुरबत में अकेला हूँ मैं, तन्हाई डराती है, ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। और झूले में पड़ा असग़र दिन रात है रोया, झूले में पड़ा असग़र दिन रात है रोया। जब प्यास बुझी इसकी तो फिर चैन से सोया। मक़तल में सकीना फिर क्यों, मक़तल में सकीना फिर क्यों इसे ढूंढने जाती है, ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। दरवाजे पे खैमा के एक बीबी खड़ी है, मुड़ मुड़ के जो मक़तल की तरफ देख रही है। एक खून भरे छोले को, एक खून भरे चोले को आँखों से लगाती है, ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। और वो शामे ग़रीबा, वो शामे ग़रीबा को अजब जुल्म हुआ था। सर नंगे थी हर बीबी, हर एक खैमा जला था। अब्बास का सानिए ज़ाहरा, अब्बास का सानिए ज़ाहरा
है फर्ज निभाती है। ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। तुरबत से अली असगर की, तुरबत से अली असगर की आवाज ये आती है। ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो। सूरत अल-मुबारकतुल फातिहा। Muhammad wa ali Muhammad salawat. I would now request Pawn Master Mehdi Abdullah to come and deliver his 2-minute speech. Please let's welcome with a loud Nari Salawat. Salawat. Assalamu alaikum everyone. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Today I would like to talk about the day of Ashura and the important lessons we can learn from it. Ashura is a special day that reminds us of courage, sacrifice, kindness, and standing up for what is right. On this day, we remember Imam Hussain, the beloved grandson of Prophet Muhammad. Imam Hussain and his family faced many hardships, but they never gave up their values or accepted injustice. Their bravery teaches us that doing the right thing is more important than choosing the easy path. One story that touches many hearts in this story of Imam Hussein's youngest son, Ali Asghar, who was only 6 months old. During the events of Ashura, the camp had very little water, and the children and babies were extremely thirsty. Imam Hussain carried baby Ali Asghar in his arms and asked for water for him. Ali Asghar was an innocent baby who had done nothing wrong. Instead of receiving water, the baby lost his life in this tragic event. Although Ali Asghar was very young, his story had become a symbol of innocence, patience, and the suffering that innocent people can experience during times of injustice. His story reminds us that the care for those who are vulnerable and never ignore the needs of others. The day of Ashura is not only about remembering sadness, it is also about learning important lessons that we can use in our daily lives. First, it teaches us to be honest and truthful, even when it is difficult. Second, it reminds us to help others and show kindness to people who need support. Third, it teaches us to be patient during challenging times and never lose hope. As children, we may not face the same challenges, but we can still follow these lessons. We can stand up for someone who is treated unfairly, include others who may feel left out, and always choose kindness over unkindness. Ashura reminds us that even one person, no matter how young or old, can inspire the world through courage, compassion, and strong values. Today, let us remember the sacrifices of Imam Hussain, Ali Asghar, and those who stood for truth and justice. Let us promise to become people who are brave, kind, honest, and caring. If we carry these lessons with us every day, we can help make our schools, homes, and communities better places for everyone. Jazakallah khair for listening. Salawat.
Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Salli ala Muhammadin wa ali. Assalamu alaikum jamia wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu'minin, as you can see on the screen, all Marumins Majlises have been put in. Please join me in reciting Surah Fatiha for all the Marumins. Al-Fatiha. Mu'mineen, just to inform you that our sister Jamaat Mu'mineen from HIC are be joining us as well today. So before the main program commences, I don't want to disturb the situation. Be kind enough to join forward so they can come and join us as well. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Mu'mineen, this message is from our sister Jamaat HIC. All Mu'mineen, ladies and gents, are invited to attend the HIC Shab-e Ashur and Sham-e Ghariba Majlis and Azadari program at Imam Raza alayhi salam Center on Thursday, 25th of June and Friday, 26th of June. The program will commence at 9 p.m. All are humbly requested to attend. Mu'mineen, just to remind you that the Minab Remembrance tent is outside the shop in the HIC car park today. Please, before you go home, please do try and visit, even if you only have a few minutes to reflect and remember. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Can I ask those boys who have just arrived and sitting in the gangway over there, can we please keep that area clear? Boys, come forward. It'll be highly appreciated. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Mu'mineen, I'll request upon Mullah Sahib to come and tell us regarding Amale Ashura tomorrow. Please let us come in with a loud Nare Salawat. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Tomorrow morning at 11 a.m. we will have the A'mal of the day of Ashura. And one of the recommended acts of A'mal of Ashura is to recite 4 rakat namaz. In the first rakat, and you recite in the units of two rakats. So in the first rakat after Suratul Hamd, you recite Surat Kafirun. In the second after Suratul Hamd, you recite Suratul Tawheed. In the next 2 units, in the first rakat, you recite Surat Al-Fatiha followed by Suratul Ahzab, Surah number 33. And then in the next rakat, you recite after Suratul Hamd, Surat Munafiqun. I have explained this, and I'm requesting you that please, those who wish to perform this, do perform them earlier than 11 a.m. at home or coming to the masjid and praying. Inshallah, at 11 a.m., we will begin with Ziyarat Ashura, and we hope to recite the La'an and the Salam 100 times, inshallah. So requesting you all, please, to join us for Amal Ashura tomorrow, inshallah. Shukran. Salawat. Nare Takbir. Nare Risalat. Nare Haydari.
जब हुई ज़ोर तलक कत्ल सिपाहे सबीर, जब हुई ज़ोर तलक कत्ल सिपाहे सबीर, गैर अस्कर न रहा नूरे निगाहे सबीर, गैर अस्कर न रहा नूरे निगाहे सबीर, थी फ़क्त रूहे अली खुस्त पनाहे सबीर, थी फ़क्त रूहे अली खुस्त पनाहे शबीर, हक से कहता था कि तू रहियो गवाहे शबीर, हक से कहता था कि तू रहियो गवाहे शबीर, सर फिदा करके सरी के सौदा होता हूँ, सर फिदा करके सरी के सौदा होता हूँ, आज मैं तेरी अमान से अदा होता हूँ। सलवात। Please recite another salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. This poem is entitled Lullaby. When was the last time you heard a child cry? Not because he was afraid, but not because he had fallen, but because thirst had reached his voice first. When was the last time you heard a cry grow quieter, not because it was answered, but because there was no strength left to ask again? I ask, have you ever seen lips so dry they begin to resemble the earth beneath them? And have you ever watched a mother search her empty hands for something that does not exist? No water, no shade, no answer, only the unbearable labor of looking into your child's eyes when all they ask for you is life. When was the last time your mother wept and there was nothing you could do except becoming another witness to her breaking, or when a child reached out for comfort and the only thing a mother could give him was her voice? So Rubab gathers what little tenderness remained and stitches it into a lullaby. My little one, sleep if only, because sleep does not know thirst. Rest if only for a moment before the desert learns your name. Tonight I place the whole night into your cradle. Tonight, my Asghar, I sing to you what will be my last, but there was one lullaby sung through lips split by thirst, a lullaby that history has never managed to finish, asking for what sin did they shear his neck, and where the arrow attacked from the fountain of blood that poured from his neck so tender. Hussein froze, thinking how to give him back to his mother, so he walks as he cries, as he walks he falls, and his words just utter Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And here is Hussein as he looks at the sheared neck of his young moon. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. By God, no son should be buried by their father, but how can I bury you this soon? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zainab, where do I find a coffin for my son whose small neck in my arms rests? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
your sky will take your blood, so your father's grey beard will turn red. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So sleep, my son, for your face I will yearn. You were sent by Allah, and to Him you return. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Return to the skies, my young moon. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. But O Askar, what do I tell your mother? Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Mu'mineen Ashura Day car parking. Wellington Street car park parking fees have been waived off for the community for Ashura Day, the 26th of June. Please do not pay for your parking if you park at Wellington Street car park. Shuttle service will be made available to and from mosque. The shuttle service can be identified with flashing amber lights on roof of the vehicles. The vehicle will be available outside mosque compound by the gates as well as Wellington Street car park. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. I will now request upon Sayyid Muhammad Rizvi Sahib to come and deliver today's lecture. Please let's welcome him with the loudest Nare salawat. Nare Risalat, Nare Haydri, Husainiyat, Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad ajil. Deen Panas. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات على
Muhammad wa ali Muhammad. Before I begin, brothers, if I could request you all to move as far forward as you can, so that the brothers that come later on, it's Shab-e Ashur, it's going to get busier. If I may request you, our respected Mukhi has been requesting you every night, but tonight, if upon my request, we could have brothers move as far forward as possible, so that inshallah the program can run smoothly with the loudest of your salawats. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. Wherever you have space, please make space for the mu'mineen that are to come later on. And the brothers who are sitting at the back, if they can keep walking forward, so that inshallah it gets easier. I won't bite if you come closer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I've tried every night to begin my series of majalis with an ayah of the Holy Quran. And again, tonight I've been honored to begin with yet another ayah of the Holy Quran, which is befitting of the mawdu', of the subject that we are going to discuss. And sometimes it's not easy to find an ayah depending on what the mawdu' is. But yet I have tried very hard to begin the majlis with kalamullah, with the word of Allah subhanahu wa ta'ala. This is of As-Sajda 22, where Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed, we will gain retribution from the criminals. We will punish the criminals. We will bring them to justice, and we will recompensate those who have been wronged. And that I link with somebody who you all know, or you have heard his name, somebody whose name pops up a lot when you read the Tarikh of Ahlul Bayt, when you read the names of the Imams, especially after Karbala, what happens directly after, within 3-4 years. This is none other than Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Mukhtar, who perhaps many of us didn't even know about him, except if we are amongst those who have studied or have an interest in history. But the vast majority of us did not know Mukhtar until we watched Mukhtar Nama. Yes? And this is, of course, a drama series of 40 plus hours, which was made by Iran in 2010, 2011, many years ago. And it did a fabulous job at introducing a fabulous personality who remained buried for generations. The reality is such. Except the Ahlul Hawzati wal Ilm or Ahlul Tarikh, or those who may be interested, or those who are familiar with books. But for the layman, this has been fabulous. And, you know, year after year, it's played in Iran, in Muharram, on the TV channels, and many mu'mineen watch it as well. And if you haven't seen it, then it's something you must watch. Because it's one thing to read history, but it's another to watch it being played back in front of your eyes. Especially if you're not a person of reading, if you're not a person who enjoys books, and that's fine. Some people don't enjoy reading, some people do. So in that case, make it upon yourself that, inshallah, after Muharram or whenever you get time, this is something you will watch, because there's a lot you get to learn, not just Mukhtar, but Karbala, and the background, the context of Kufa, and what kind of people live there, and what the political situation was at the time before Imam Hussain, during Imam Hussain in Karbala, and right after Karbala. But Mukhtar, despite that, if you go to the narrations and the books of the ulama, remains a controversial personality. Why? Because throughout some of the narrations that have popped up in our books and the books of others, there have been some allegations that have been put on Mukhtar. I want to put those out to you first, and then inshallah we'll jump straight into it. Allegation number 1 against Mukhtar, they say, which makes him controversial, is that there is evidence to suggest Mukhtar claimed Nabuwah. There is evidence to suggest, some of them have written in their books, that Mukhtar said that Jibreel descended upon me. And there are some narrations, or there are some words that have been attributed to him in the books, where he tries to speak upon the wazn of the Quran. You know, Quran has a rhythm. Some of the ayat rhyme with one another. And so there are some, and the ulama have collected them in their books, you know.
You can go and see them for those of you who are interested in the research part of things. But they have collected speech, kalam, which is associated with Mukhtar. And they say, look, he's trying to copy the Quran. He's trying to say he's a prophet. He's trying to speak like the Quran. So they say this is his main and major problem. Number two, they say he wasn't a Shia Imamiyya. Rather, he was a Kaysaniyya. Who are the Kaysaniyya? Or there are others who have called him Mukhtariyya. And he's a firqa. Kaysaniyya was a firqa of the Shia. And the belief was that after Amir al-Mu'mineen, after Imam al-Hassan, after Imam al-Hussain, Imam goes to Muhammad ibn al-Hanafiyyah. And this Muhammad is the son of Imam Amir al-Mu'mineen from the tribe of Hanafiya. So he's Hanafiya, but he's the son of Imam Amir al-Mu'mineen. His mother is Khawla. But they say that the Kaysaniya group which emerged after Muhammad Hanafiya are the ones who said Imama is, after Imam Hassan, Imam Hussain, Imama is with him, not with Sajjad. The son of Ali is there. He's a senior of Bani Hashim. He's amongst the chief of the people of Medina, the greatest of them. So why should we give it to Al-Imam al-Sajjad? And so there is much history on that, but that's not my topic for tonight. There's another allegation against Mukhtar. Number three, they say, and because of that he claims Nabuwa, because of this allegation, you know what they started to call him? Al-Kadhab, the liar. So sometimes you find narrations in the books where Mukhtar's name comes up and straight away Kadhab, liar. And there's much debate on that. And finally, they say even the fourth Imam cursed him, refused to see him, and had nothing to do with Mukhtar al-Thaqafi. So at the end, what he did was for the sake of power. One of the ulama, Shahristani, in his Milal wal-Nahl, in his book, he says Mukhtar at first was a Khariji. At first when he began, he was a Khariji. Then after that, he became a Kaysani. And then he had his own firqa by the name of Mukhtariyah. Okay? These firq don't exist anymore. Now the problem is, when you go through history and you look at the life of Mukhtar from the time he's born until the time he's martyred, it's very difficult to believe all of these allegations against Mukhtar. Yes? So these are the allegations. These are the problems. They said he's a liar. They said he announced prophethood. They say he said Jibreel descends upon him. They say he was a Kaysaniya. He wasn't even a Shia. He was a Kaysaniya. In other words, he ignored Imam Sajjad and he says Imama is for Muhammad Hanafiya, and used to invite people. Come to the Imam of Muhammad ibn al-Hanafiya. Come to the Wilaya of Muhammad ibn al-Hanafiya. And the Kaysaniya actually believed that Muhammad ibn al-Hanafiya did not die. He was hiding in a Jabal known as Jabal Radwa. And he's the Mahdi. He will emerge at some time and he will fill the earth with justice and peace, as it would have been filled with tyranny and destruction and dhulm and oppression. So they have the belief that Muhammad ibn al-Hanafiya is the Messiah, is the Mahdi. What do we say? What do the ulama of the Imamiyya Ithna Ashariya say? But before the ulama, let's look at what the Ahlul Bayt say about Mukhtar. He's born, the narrations say, كان مولده في عام الهجرة. He was born in the year of Hijrah in Madinatul Munawwarah. And this Mukhtar, by the way, we discussed this last night. Mukhtar is from the same tribe as Urwa ibn Mas'ud, the grandfather of Hazrat Bibi Layla, salamullahi alayha, the mother of Ali Akbar alayhi salam. Mukhtar is from the same tribe. In fact, her father and Mukhtar are cousins, first cousins. Bani Thaqif. Bani Thaqif was known for its bravery. Bani Thaqif was known for its generosity. There were many great, though it was a Qabila at first in Ta'if, which was known for its kufr, it was known for its arrogance, but yet there have been many great personalities who have come out of Bani Thaqif. Mukhtar, one of them, and this Urwa, the grandfather of Layla, which we discussed in detail last night, who's been compared to Habibun Najjar of Sahib Ali Yasin.
last night. His mother is the one, so that's his father. In fact, his father, if you read his history, which is not my topic tonight, but briefly, he is somebody who was at the forefront of the fights against the Persians. When the second caliph took charge, he sent the Muslims, go and fight, and Islam must spread, and we must take Persia. Mukhtar was only 13. He joins his father and his uncle Sa'ad to go and fight at the forefront of these armies. His father is killed on a day, on a bridge, and hence they say he's killed on the day Yawmul Jisr, the day of the bridge. He's only 13, and he is taken in by his uncle Sa'ad to be raised by him. So shuja'at and bravery was within his blood. He fought as a 13-year-old against the Persians. His mother is one that they say in the end, the last day of the life, fast forward to the last day of Mukhtar, when he's surrounded by the Zubairis, who were thirsty for his blood. Abdullah ibn Zubair. He sent his men to surround Darul Imara and kill Mukhtar. One of them came up, and Mukhtar's mother was alive, by the way, when Mukhtar was martyred. They said to her, look, you're the mother of Mukhtar. It's very unlikely Mukhtar will survive this now. But if you want, we'll carry you out. We'll find a way out for you. She says, no. For you to carry me out like a coward, I'd rather be taken as a prisoner. Again, bravery exists in this Qabila. But let me give you this narration from a companion by the name of Asbagh bin Nubata. And as you know, Asbagh min ashab Amir al-Mu'mineen, amongst the greatest companions of Imam Amir al-Mu'mineen when it comes to the ashab of Imam Ali alayhi salatu wasalam. And you find his mention a lot in Kufa as well. In fact, he's one of those companions when Imam Ali alayhi salam in Kufa says to everyone to go home when he's struck. He says, I want to be with my family. And all the friends go. They hear that one of the companions is sitting outside the house of Imam Ali alayhi salam crying. Imam Hassan opens the door, he finds Asbagh ibn Nubata. He says, I can't leave Ali ibn Abi Talib, I'll sit outside and cry. This Asbagh narrates this riwayah. Now you know who Asbagh is? His greatness, his fadila. Now listen to the riwayah. رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنين عليه السلام. I saw Mukhtar as a young boy sitting in the lap of Imam Amir al-Mu'mineen. What does that tell you of the greatness of Mukhtar? He says, Mukhtar is young. I saw him. Wallahi ra'aytul Mukhtar. I saw Mukhtar sitting on the lap of Imam Amir al-Mu'mineen, and Ali ibn Abi Talib is patting his head and his shoulders. And he said something. Ya kayyasu, ya kayyas. What does that mean? Oh smart, oh intelligent, oh clever boy. Ahsanu tadbir, aqil. Other words in Arabic. Oh smart, oh intellectual. Somebody, even smart and intellectual don't even describe this word. Ahsanu tadbir. Somebody whose strategy never misfires. And that's one of the ulama would say about him. Al-Allama Ibn Numal Hilli, one of the graduates of the house of Hilla, which we discussed a few nights back. He says that the uniqueness and the smartness of Mukhtar was such that sometimes when you don't know the answer of something, you have to make your best guess. Don't know the answer. The only option now is to make the right guess. He says Mukhtar's guess would never be wrong. Mukhtar, and if you study his history, he was smart. He knew what he was doing. And that's why there was a disagreement between him and the Tawwabun. You know those people of Kufa who felt bad after Imam Hussain was killed? They said, that said, we're putting on the kaffans, we'll go and fight, and we want to die. Because they said, we have left Imam, we betrayed him. There was a sense of grief and depression. They call them Tawabin, those who are repenters, will repent. And the only way to repent now is to give blood. Mukhtar said, no. I won't go to die. I'll go to kill the killers of Hussein. His strategy, his mindset was unique. SubhanAllah, it was different. He said, I won't rise for that. I will rise to die. I will rise to die. If I die, I die.
But before I die, I want to make sure the enemies of Imam Hussain die. Yeah? So there are, even today, you find two types of people. Those who say, I will go and die for Islam. And they have a maqam with Allah. And there are those who say, no. My mission is more than that. I have to be smarter. And so he was indeed a very smart person. And this here is evident to that fact by Asbagh ibn Nubata. The Imam said, and for a ma'soom, for Amirul Mu'mineen, it's no joke when Ali calls somebody smart. It's not a joke. And Ali is not exaggerated. He doesn't exaggerate in his kalam. The kalam of Amirul Mu'mineen is haq. Mi'a bil mi'a. 100%. That's riwayah number one. And some of our ulama who have denied Mukhtar being a Kaysaniya, they've said, look, if some of them have called him a Kaysaniya, it's because of this Kayyas. It comes from there. Not that he's a firqa Kaysaniya. Number two, another narration in the haqq of Mukhtar. This is in the time of Imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu wassalam. He says, after Hajj, I was sitting with the Imam in Mina. The Imam was in Mina. In his khayma, in his tent, all of a sudden, it opened and an old man walked in. When the Imam saw him, he came to the Imam and he was very respectful towards the Imam. Kisses his hand. He embraces him. The Imam says to him, who are you? He says, I am Abul Hakam. Abul Hakam is who? He's the son of Mukhtar. As soon as the Imam hears that, the Rawi of the hadith says that the Imam didn't have much space next to him. But he grabbed him and he sat him next to him. He said, we're all sitting, but he brings him in. He says, come sit next to me. And he says, Wallah, he showed him so much love. He showed him so much importance. And after a brief conversation, Abul Hakam says, Yabna Rasulillah, I have a question. He says, what is it? He says, I want you to judge my father. Because there are people amongst the Arabs that call him kadhab, liar. And whatever you decide for him is what I will accept. You know what the Imam says? He says, how dare they? How dare they call him kadhab? My father had informed me that my mother's mahr, dowry of marriage, was paid by the gifts that Mukhtar gave to Imam Sajjad. Let that sink in for a minute. Inna abi akhbarani. My father informed me that the dowry of my mother was paid by the gifts that Mukhtar would send him. And so number one, that shows you Mukhtar would send gifts to Al Muhammad. And number two, Al Muhammad would accept the gifts of Mukhtar. Yes? Otherwise, if there was a problem, if his aqidah was batil, if he was not an Imamiyya, Ithna Ashariya, Shia, if he was a liar, if he was somebody who claims prophethood or any of those allegations, it was incumbent upon the Imam to reject him outright. Second, one more before I move on. As you know, when the killers of Imam Hussain, their heads were brought to Imam Sajjad. Imam Sajjad did sajda of shukr. And he says, Rahimallahu Mukhtara in sajda. The same thing what Imam Baqir alayhi salam says to Abu al-Hakam. Rahimallahu Abak. 3 times. May Allah's rahmah be on Mukhtar. May Allah's rahmah be on Mukhtar. May Allah's rahmah be on Mukhtar. Imam Baqir says to Abu Hakam, may Allah's rahmah, mercy be on your father, your father, your father. 3 times. The ulama of Rijal, when you know, there's a ilm known as ilm al-Rijal, the Rijaliyun, they say the tarahhum of the Imam, when the Imam, tarahhum is when the Imam prays for mercy upon a person, the ulama of Rijal debate whether this actually means
that the Imam is authenticating this person. And many of the ulama al-rijal, they say the tarahum of the Imam, for the Imam to say rahimallah ala masalan fulan, may Allah's rahmah be on fulan, may Allah's rahmah be on fulan, that has a meaning. It's not just out of the moment, out of the habit. For the Imam to say rahimallah fulan means that the Imam is authenticating such a person. But then why the criticism of Mukhtar? Why the criticism? Why do we have it? Let me quote you the works of Marhum Ayatullah Sayyid Abul Qasim al-Khu'i rahimahullah. This is somebody who has written extensively on Mukhtar. And as you know, ulama have written books on Mukhtar. Sheikh Saduq has a book on Mukhtar. Allama al-Hilli has written on Mukhtar. Qudama have written on Mukhtar. You know, this movie is new, this drama series. Books since 1,000 years back. Sayyid al-Khu'i, being amongst the sort of contemporary scholars, mutakhirin. And as you know, an expert of ilm al-rijal amongst the mutakhirin. He has a mu'jam al-rijal. He has a volumes of where he comments on the authenticity of rijal. So he himself is a giant in rijal. Like was Allama al-Hilli, like was Allama Mamaqani, like was Agha Buzurg al-Tahrani, like was Allama Ibn Numahilli, and others. Sayyid al-Khu'i says, we have two narrations when it comes to Mukhtar. Those who are in the madh, those who are in the praise of Mukhtar, and those who are in criticism of Mukhtar. So he says, then what do we do? He says, I've gone through all of them. And the vast majority of the criticism that exist in the books are in the books of Ahl Sunnati wal Jama'ah. If that wasn't enough, I can give you a few more. If that's not going to get me a salawat, then I'll do another one. Allahumma salli ala. Chale shukar hai kisi ne to. Yani one is that they come from, their roots go back to the books of Ahl Sunnati wal Jama'ah. Ibn Khallakan, and other commentators. Anyway, but what about the ones that are in the Shia books? He says, as for the ones that have come in the Shia books, they've only narrated it from the Sunni books. That's his second jawab. His third jawab is that all of the narrations that criticize Mukhtar, and there are narrations that criticize Mukhtar, he says, and he's expert of Rijal, he says all of them have huge weaknesses when it comes to the sanad. There's crazy problems when it comes to the sanad of that. And that itself is a debate, but it's not for the mimbar. But we'll keep it at that. Number one, they've come for Ahl Sunnati wal Jama'ah. If they've come in our books, it's a naql. They've done naql from the Ahl Sunnah, books of the historians of Ahl Sunnah. Number three, the problem, not to mention the problem in the sanad, which makes the hadith sahih, it makes the hadith da'if. And number four, this is interesting. He says, if you're going to pick on Mukhtar, that he has so many criticisms against him, then what will you do about Zurara? Mullah will correct me if I'm wrong. What about the hadith about Zurara? One of the great students, companions of the Imams, Imamain as-Sadiqain, who taught many hadith from fiqh. Once Imam praises Zurara, then another time the Imam is criticizing Zurara. And the same can be said about Muhammad ibn Muslim, again, who's a rawi of many of the hadith that have come up in our books like Al-Kafi and the books of Sheikh Saduq. One time the Imam praises him, one time the Imam criticizes him. And the same is said about Az-Zayd al-Shaheed, Ali ibn Sajjad. One time the Imam is praising him, one time the Imam is criticizing him. Now Sayyid al-Khu'i says this is all based on taqiyya. Sometimes the Imam praises him, but then to save his life in front of the authorities, he criticizes him. He's not one of us. And the Imams did that to save. The Imams are merciful. They're not going to say something that's going to get you killed. Shabi Ashur, Imam Hussain says, go. They want to kill me. The Imam do not put the life of any mu'min in danger for no reason.
So Sayyid al-Khu'i says, sometimes it's based on taqiyya, that they had to say words like this. But the case of Mukhtar is something different. You know why? Zurara's case is easy. The case of Muhammad ibn Muslim is easy. Zayd, you can put him next to Mukhtar as well, actually. You know why? Because they took on the superpower. You can imagine the hate. You can imagine what they did was going to make this sort of thing happen. They picked a fight with the Umayyads, with the authorities. And so they left no stone unturned, as they say, to fabricate lies about Mukhtar. Why? Because they want people to join him. The Zubairis hated Mukhtar. Remember? The same Zubairis who attacked Zubair hid in the Kaaba when it was being attacked, while Mukhtar was trying to save the Kaaba. The same Mukhtar who in Kufa, the first house to welcome Muslim ibn Aqil was the house of Mukhtar. Until Mukhtar was put in prison, and then he goes into the house of Hani ibn Urwa, al-Shaheed. Mukhtar and Hani and Muslim, and these are amongst the ru'asa, amongst the elders of the Shia of Kufa. So when we say the Kufa betrayed, sometimes within this whole Kufa thing, there is a Sunni propaganda which is being pushed to try to make Kufa look bad. One of our ulama says something beautiful. He said this is a propaganda actually, because some of the best Shia have also come from Kufa. And secondly, while it is true that they wrote to him and then didn't help the Imam, it is also true that nobody wrote to him except Kufa. I don't know if I was able to convey this. Let that sink in. Makkah, what did the people of Makkah do? Yabna Rasulullah, don't go. This is better. What did the people of Medina do? Yabna Rasulullah, stay here. This is the haram of the Prophet. Nobody said we'll help you. Yeah, I don't know if this is how clear this is. But at least one of the ulama is reading him just a few nights ago. He says at least the Kufi said we'll help you come. At least they'll have that merit on the day of judgment. Okay? So unfortunately there is a propaganda to make Kufa look really dirty and make Makkah and Medina look muqaddas. When Imam Sajjad says, Ma bi Makkah wal Medina 20 rajulun yuhibbuna ahlul bayt. In all of Makkah and Medina, there were not 20 who truly loved us Ahlul Bayt. Yes? And so the case of Mukhtar is such that he had messed with so many of the powerful enemies of Ahlul Bayt. He had killed so many of the enemies of Ahlul Bayt that this sort of character assassination was bound to take place. And not to say that on the day of Ashura, when Imam Hussain himself says, when he realizes that they've killed so many of our friends and my companions and my family member, he says, in the hadith, you can find this, and there's a matching hadith which matches Imam Amir al-Mu'mineen, soon Allah will overpower you from one of the young men of Bani Thaqif. There's a reference to a ghulam, and ghulam here means young man of Bani Thaqif. Imam Amir al-Mu'mineen has a similar hadith where he says, soon my son will be killed, but Allah will kill his killers from one of the youth of Bani Thaqif. And who is this? If we look through history, who is it? And so you can see that how Mukhtar had enemies from all angles. And of course he was a staunch Shia. So amongst the masses, Mukhtar had given everybody every reason to be his enemy. He only cared about one thing, which was to avenge the killers of Imam al-Hussain alayhi salam. My final point or so before I wrap up and give some time to Masa'ib. The hadith of the Imam which says, and we have narration, and this one comes from the second Imam, Hasan al-Mujtaba salamullahi alayhi. The one who loves us, and this is for everybody, بِقَلْبِهِ, somebody who loves us with his heart, and the one who helps us with his tongue and his hand, فَهُوَ مَعَنَا فِي الْغُرْفَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ. That person
who helps us, who loves us and helps us with his hand and his tongue, who will be with us in that ghurfa, allati nahnu fiha, the ones who will be with that same room in which Allah gives us in paradise. He will be with us in that room. The condition is what? You love us with your heart and you help us with your tongue and your speech and your hands. Now, if this is the case for the one who loves Ahlul Bayt and helps them with their tongue, defends them by speaking for them, and defends them with their hands by writing something or typing something for them, then what about Mukhtar al-Thaqafi? What about somebody who goes to the extent that the Imams would say that some of the Mukhtar helped us so much that some of the homes of Banu Hashim that were destroyed were rebuilt by the money sent by Mukhtar. The house of Aqil, for example, it's come up in history. That the house of Aqil and the sons of Aqil, which was destroyed, was rubble, was rebuilt by Mukhtar. Mukhtar would send money to be mahr. And so Al Muhammad would marry off their daughters for marriage. Now, if this is not helping Al Muhammad, then I don't know what is. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal. And as I connect to Masa'ib, remember, this was also a man of zuhud and taqwa. When the two wives of Mukhtar were arrested by the Zubairis, they said to them, curse Mukhtar. One of the wives says, how can I curse a man who prays all night and fasts all day? Some of his friends that were around him, especially in the army, the comrades, his brothers that were around, they would say that when he became a ruler, when he became the Amir, we realized that he used to continuously fast during battle. And we used to say to him, what fast is this? He said, this is the fast of shukr for attacking the enemies of Ahlul Bayt. Yes? As in, whenever he would attack the enemies of Ahlul Bayt, he would do salat of shukr and he would keep a fast of shukr. He was a man of zuhud. He was a man of taqwa. He was a man of prayer. And so there is no doubt. Ayatullah Sayyid al-Khu'i concludes that in my mind there is no doubt. And so is the opinion of the majority of the Shia ulama, be it Sayyid al-Khu'i, Alam al-Hilli, be it Ibn Numa al-Hilli, be it Allama Sharif Baqir Qarashi, who's written many of the books on the lives of the Ma'sumin. They all agree that Mukhtar indeed was a man of God, amongst the greatest of the Shia of Al Muhammad, one who helped Ahlul Bayt, and he has a stamp of guarantee from Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. But to end, when the heads were brought to Imam Sajjad, the Rawi, his name is Minhal. Minhal says, the Imam asked me, ask Mukhtar, when will he send the head of Harmala? Who's Harmala? This Harmala is the same tyrant. May Allah curse him. He's the same zalim who killed that small baby in the hands of Hussein. Ajrakum Allah. You know how Mukhtar found Harmala? When he finds Harmala, when he's arrested, Minhal narrates this. He says, Mukhtar says to him, bring him to me. And they bring Harmala. And he says, oh Harmala, you were there on the day of Ashura. And it was the habit of Mukhtar. And this is one of the way Tariq of Karbala reaches us. Mukhtar would ask, what did you do? What did you do? What did you do? Harmala was embarrassed to say what he did. He says, oh Mukhtar, it's not something I can narrate to you. Who would want to narrate this, knowing that they would get killed? But Mukhtar says, you have no choice. Because either way, you will be put down. So tell me what you did. When Mukhtar pushes him, he says, on that day,
On the day of Ashura, I had 7 arrows. 3 of them hit the target and 4 of them missed. Ajrakum ala Allah. You know what Harmala says? He says, I fired an arrow where? I fired an arrow which went into the eyes of Abul Fadl. Ajrakum ala Allah. He says, what about the other arrow? He says, I fired another arrow when nobody was left with Hussein. Right before Asr Ashur, when Hussein was on his horse, he was all alone. He didn't have his companions. There was nobody left around him. I fired an arrow and it hit the heart of Aba Abdullah. But he then goes quiet. He says, what about the third one? He says, that I cannot tell. He says, no, you must tell me. He says, the third arrow I fired when Hussein brought out a small child, a small baby that was crying, that Umar ibn Saad said to me, fire the arrow into the neck of that child. He said, oh Allah, I got out a 3-headed arrow, an arrow that was used to put down animals. He says, I fired an arrow into the neck of that child. Ajrakum ala Allah. And you know what the narration states? When he fired the arrow into the neck of Ali al-Asghar, Imam Hussain could not control his child. The arrow caused Ali al-Asghar to jump from the hands of Aba Abdullah. Ajrakum ala Allah. Azadaro aa gayi shab Ashur. ये मेरे आका की आखिरी रात है, ये रोने की रात है, ये मातम की रात है, ये गिरिए की रात है. क्यों? क्योंकि आज माओं के सामने माओं की गोदों के पाले मौजूद हैं. आज ज़ैनब के सामने ओनो मोहम्मद हैं. आज जनाबे ज़ैनब के सामने उनके बेटे हैं, लैला के सामने अकबर हैं, उम्मे फरवा के सामने कासिम हैं, और जनाब उम्मे कुलसूम के सामने उनके भाई जनाब अब्बास हैं. आज माओं के सामने ये चांद से चेहरे मौजूद हैं. लेकिन हाँ आज़ादारों, जो कल की रात होगी ना, ये चेहरे खाको खून में मिल जाएंगे. अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह. आज़ादारों, शब आशूर बड़ी सख्त रात थी. रावी कहता है कि सारी रात हमें अहले बैत के खैमों से इबादत की आवाज़ें आती रहीं. कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई नमाज शब पढ़ रहा है, कोई नमाज नाफिला पढ़ रहा है. हाजादारों, और फिर कुछ ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को जंग के लिए तैयार कर रही हैं. कहा बेटा कल जंग का दिन है, कल मुझे फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू करना. अगर ज़ैनब का खैमा है ना, तो बीबी ज़ैनब कहती है, बेटो कल कासिम न जाने पाए तुम्हें जाना है, कल अकबर से पहले तुम्हें जाना है. हाँ आज़ादारों, फिर लैला अपने जवान से कहती है, मेरे जवान मुझे फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू करना. कभी उम्मे फरवा है, कहती हैं, मेरे लाल तू मेरे हसन की निशानी है, तुम्हारे बाबा की वसीयत थी इस दिन अपने आप को अपने मौला पे कुर्बान कर देना. अजरकुम अल्लाह. बड़ी सख्त रात गुजर गई आज़ादारों. अब जब कल का दिन चढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता सारे असहाब जाते गए और उनके लाशें आते गए, यहाँ तक कि सारे असहाब शहीद हो गए. और अकबर का लाशा भी आ गया, कासिम का लाशा भी आ गया, ओनो मोहम्मद के लाशे भी आ गए, औलाद अकील, औलाद जाफ़र तैयार, औलाद मुस्लिम के तमाम शहदाए बनी हाशिम के लाशे आ गए. जब कोई ना रहा, मेरा मौला हुसैन तने तन्हा मख्तल में उतरता है, आवाज बुलंद करता है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना. कोई है जो हुसैन की मदद करे? जब किसी ने आवाज न दी ना, फिर मेरे मौला ने कहा, कोई है जो मोहम्मद की बेटियों की मदद करने वाला है? बस आज़ादारों, मेरे मौला ने जब ये आवाजें दी, कोई आवाज ना आई. इतनी देर में खैमे से बीबियों की रोने की आवाज आई. फौरन हुसैन खैमे की तरफ आए. कहा, बहन ज़ैनब क्या हो गया है? अभी हुसैन जिंदा है, अभी मत रोना, अभी तुम्हें बहुत रोना है.
आजादारों, उस वक्त बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा भैया हुसैन, जब आपने हल मिन नासिरिन की सदा बुलंद की थी, इस बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया था। ये बच्चा तब से तड़प रहा है। आजादारों, बच्चों में जितना भी कोई बच्चा छोटा था ना, उसके बावजूद जनाब सकीना भी बहुत छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद मिलता है कि हमेशा आके कहती थी, बाबा जान मैं प्यासी हूँ, चाचा जान प्यास बर्दाश्त नहीं होती, फूफी जान प्यास से मरी जा रही हूँ। लेकिन ये बच्चा इतना छोटा है, ये तो बता भी नहीं सकता कि कितना प्यासा है। बस कभी माँ को देखता है, कभी अपनी फूफी को देखता है, लेकिन जब बाप की सदा सुनी अपने आप को झूले से गिरा दिया। बस मेरा मौला हुसैन समझ गया, अब किसकी बारी है? अब इस शीरखार की बारी है। एक मर्तबा कहा, ज़ैनब लाओ मेरा लाल, लाओ मेरा बेटा, मुझे ला के दे दो। मक्तल की रिवायत है कि मौला ने रुबाब से नहीं कहा आप मुझे मेरा बेटा ला के दे दो, कहा ज़ैनब मुझे मेरा शीरखार बच्चा ला दो। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपनी कोई माँ अपने बेटे को कैसे मौत के हवाले कर दे। लेकिन रिवायत है कि इमाम हुसैन ने अली असगर को सीने से लगाया, अभी निकलना ही चाहते थे कि रुबाब दौड़ती हुई आ गई। कहा, आका एक आखिरी मर्तबा इस माँ को दीदार कर लेने दीजिए। एक मर्तबा रुबाब ने अपने बच्चे को सीने से लगाया, खैमे में आई, एक नया लिबास पहनाया और दौड़ती हुई वापस आ गई। कहा, आका ये मेरी तरफ से हदिया कुर्बानी कबूल कीजिएगा, कल मैं असगर को जनाब फातिमा के सामने पेश करूंगी। अजरकुम अलल्लाह। बस दो जुमले, जहमत तमाम। मेरा मौला अपने लाल को उठा के एक मर्तबा मक्तल में उतरा है। अब जालिम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हुसैन के हाथों पे कोई है। कभी कहते हैं कि क्या ये कुरान है, ये हुसैन के हाथों पे क्या है। भाई मेरा मौला करीब आया। मेरे मौला ने उस वक्त भी खुतबा दिया है जो तारीख में मौजूद है, अजरकुम अलल्लाह। लेकिन उसके बाद मेरे मौला ने कहा, देखो अगर मुझसे कोई दुश्मनी है ना, तो ये बच्चा तो हर मजहब में मासूम है, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी कौम से हो, बच्चे तो मासूम होते हैं। अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अपने लाल को जमीन पर रख देता हूं, तुम खुद आके पानी पिला दो। अज़ादारों, मक्तल में ये जुमला मिलता है कि अली असगर की हालत इतनी बुरी थी कि आपको तशबीह दी गई है उस मछली से कि जो पानी से बाहर हो और बिल्कुल करीबुल मर्ग हो, मौत के बिल्कुल करीब वो मछली हो। उसे अब पानी दे भी दिया जाए ना, अब जिंदगी का इम्कान नहीं है। असगर उस हालत में थे। हाजादारों, एक मर्तबा हुसैन ने जमीन पर रखा, क्या देखा कि बच्चे ने खुश्क जुबान निकाली है और खुश्क होंठों पे फेरी है। लेकिन इनके दिल इतने पत्थर हो चुके थे, किसी ने पानी नहीं दिया। फिर मेरे मौला ने हुसैन ने उठा लिया। हाजादारों, अब क्या मक्तल में मिलता है कि फौज यजीद में बाज लोग रोने लगे। उमर इब्न साद ने देखा, कहा ऐना हुरमला, ऐना हुरमला, ये तो फौज में इंकलाब आ जाएगा। कहा हुरमला हुसैन का काम तमाम कर दे। हुरमला ने तीर कमान में जोड़ा, अभी तीर मारना चाहता था कि ना मार सका। फिर उसने एक मर्तबा तीर मारना चाहा। उमर इब्न साद कहता, तुझे क्या हो गया है, तू तो बेहतरीन तीरंदाज है। एक मर्तबा हुरमला ने कहा, मैं क्या करूं, मैं तीर चलाना चाहता हूं। एक बीबी निकाब में मेरे सामने आती है, कहती है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। आजादारों, मैं कैसे ये जुमला पढ़ूं, आखिर वो तीर चला। मैं जुमला अर्ज करूं, बहुत सख्त जुमला है। वो तीर जब गर्दन में पैवस्त हुआ, भाई अली अकबर की गर्दन ज़िबा नहीं हुई, अकबर की गर्दन टूट गई थी। अजरकुम अलल्लाह। ये बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हुआ। एक मर्तबा आखिरी जुमला, हुसैन ने वाहिद एक कब्र खोदी है
क्योंकि ये बच्चा बहुत छोटा था। खैमे के पीछे हुसैन ने कब्र खोदी, असगर को दफना दिया कि अब जब शाम गरीबा लाशें पामाल होंगे ये बच्चा महफूज रहेगा। लेकिन हाय शाम गरीबा, नेज़े बरदार नेज़े लेके खैमे के पीछे आए, एक जालिम ने नेज़ा मारा। अब जब ये नेज़ा बाहर आया, एक नन्ही सी अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। तुझको जो पाए मादरे मुस्तर, पानी पाऊं मेरे लाल असगर। मेरे लाल उठो, मेरे लाल जलती रहती पे क्यों सो रहे हो। मेरे लाल मेरे लाल। सुगरा असगर को गोद में लाई, कहती थी ना जाओ ए भाई। क्या असर था कलाम के अंदर, दूध पाऊं मेरे लाल असगर। मेरे लाल उठो, मेरे लाल जलती रहती पे क्यों सो रहे हो। मेरा लाल मेरे लाल। असगर खून में हुआ कैसा, क्या गजब था जो के तीर ऐसा। शहीदों में तू है एक अनवर, पानी पाऊं मेरे लाल असगर। मेरे लाल उठो, मेरे लाल जलती रहती पे क्यों सो रहे हो। मेरे लाल मेरे लाल। ए शकी तुमको रहम न आया, मासूम बेगुनाह किया क्या था। पानी नहीं तो ये तीर क्यों कर, पानी पाऊं मेरे लाल असगर। मेरे लाल उठो, मेरे लाल जलती रहती पे क्यों सो रहे हो। मेरे लाल मेरे लाल।
जानती है ये दुनिया के तुझको नसीब हुआ न तुझको पानी आ मेरे असगर तू आ जा पानी पाओ मेरे लाल असगर आ मेरे लाल उठो मेरे लाल जलती रहती पे क्यों सो रहे हो मेरे लाल मेरे लाल रुबाब की आज गोद है खाली झूले को देखो वो भी है खाली सकीना तो रो रो के कहती थी पानी पाओ मेरे भाई असगर आ मेरे असगर झूला झूलाओ दूध पाओ मेरे लाल असगर आ मेरे लाल उठो मेरे लाल जलती रहती पे क्यों सो रहे हो मेरे लाल मेरे लाल कौन है माये झूला झूलाओ कहती थी लाल सो जा तू सो जा सकीनों ने दिया न तुझको पानी पानी पाओ मेरे लाल असगर आ मेरे लाल उठो मेरे लाल जलती रहती पे क्यों सो रहे हो मेरे लाल मेरे लाल या हुसैन या हुसैन Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Somebody get Ya Hussein, 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 Ya Hussein. कब्र मेरे चांद को गोरी भी सुनाना
ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को और मेरी तरह लाल को और मेरी तरह लाल को गोदी में सुलाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना सब मिलके ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को और मेरी तरह लाल को और मेरी तरह लाल को गोदी में सुलाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद सब मिलके जी बिस्मिल्लाह लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को है प्यासा है मेरा लाल ना खुद मांग सकेगा प्यासा है मेरा लाल ना खुद मांग सकेगा मिल जाए जो पानी तो मिल जाए जो पानी तो जी भर के पिलाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना सब मिलके बिस्मिल्लाह कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को है रूठे अली असगर तो वसीयत है ये मेरी रूठे अली असगर तो वसीयत है ये मेरी हर तरह मेरे लाल के हर तरह मेरे लाल के तुम नाज उठाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना 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 ऐ कब्र मेरे चांद को है प्यासा है मेरा लाल न खुद मांग सकेगा प्यासा है मेरा लाल न खुद मांग सकेगा मिल जाए जो पानी तो मिल जाए जो पानी तो जी भर के पिलाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद को लोरी भी सुनाना ऐ कब्र मेरे चांद
झूले में इसे बहन सुलाती थी हमेशा, झूले में इसे बहन सुलाती थी हमेशा। झूला यहाँ मिलता नहीं, झूला यहाँ मिलता नहीं, असगर को बताना है कब्र मेरे चांद को, लोरी भी सुनाना है कब्र मेरे चांद को, लोरी भी सुनाना है कब्र मेरे चांद को, लोरी भी सुनाना है कब्र मेरे चांद को, है लोरी भी सुनाना है कब्र मेरे चांद को, लोरी भी सुनाना है कब्र मेरे चांद को। है झूले में से बहन सुलाती थी हमेशा, झूले में से बहन सुलाती थी हमेशा। झूला यहाँ मिलता नहीं, झूला यहाँ मिलता नहीं, असगर को बताना है कब्र मेरे चांद को, लोरी भी सुनाना है कब्र मेरे चांद को, लोरी भी सुनाना है कब्र मेरे चांद को, लोरी भी सुनाना। हुसैन या 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 हुसैन पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया। तुम कैसे कलमा गो हो, इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया। तुम कैसे कलमा गो हो, इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया। तुम कैसे कलमा गो हो, इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया। तुम कैसे कलमा गो हो, इस लाइला पे जिसने जियो माशाल्लाह घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया। तुम कैसे कलमा गो हो, इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया। तुम कैसे कलमा गो हो, इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया। तुम कैसे कलमा गो, सजदे में जिसने अपना, सजदे में जिसने अपना सर भी कटा दिया, उसको बुला दिया। तुम कैसे कलमा गो हो, इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया। तुम कैसे कलमा गो हो, इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया। तुम
कैसे कलमा गो तुम अपनी गैरतों को बाजार में फिराओ रोएंगे हम कभी ना अपना मयार गैरत दुनिया को तुम दिखाओ रोएंगे हम कभी ना गैरत तेरी को जिसने गैरत तेरी को जिसने है शर्म हया दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इंसानियत के जिस दम सांसें अटक रही थी किसने दिया सहारा दुनिया में जब शरीयत दर दर भटक रही थी किसने दिया सहारा वो हक परस्त जिसने वो हक परस्त जिसने हक से मिला दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो है मोतरज बताए काबे पे संग भारी है कैसा दीन है ये आले नबी के दुश्मन इस्लाम से यारी है कैसा दीन है ये बातिल के रोक से पर्दा बातिल के रोक से पर्दा है जिसने हटा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो ये करबला न होती आज़ा कभी न होती तुम कलमा गो न होते दुनिया में ला इलाहा की पहचान कभी न होती तुम कलमा गो न होते तोहफे में जिसने तुमको तोहफे में जिसने तुमको ये ला इलाहा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इस लाइला पे जिसने घर को लुटा दिया उसको बुला दिया तुम कैसे कलमा गो इंसानियत न होते इंसानियत न होती होती यजीदियत गर सब बुत परस्त होते वहदानियत न होती होती यजीदियत गर जिसने यजीदियत का जिसने यजीदियत का है नक्शा मिटा
कलमा गो इस ला इलाहा पे जिसने घर को लुटा दिया, इसको लुटा दिया, तुम कैसे कलमा गो इस ला इलाहा पे जिसने माशाअल्लाह माशाअल्लाह दिया, उसको बुला दिया, तुम कैसे कलमा गो इस ला इलाहा पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया, तुम कैसे कलमा गो। नकवी नबी के घर का कुछ दर्द इनको होता, मातम में ये भी आते, खूने हुसैन का गम कुछ पास इनको होता, मातम में ये भी आते, गर्दन कटा के जिसने, गर्दन कटा के जिसने है जीना सिखा दिया, उसको बुला दिया, तुम कैसे कलमा गो इस ला इलाहा पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया, तुम कैसे कलमा गो इस ला इलाहा पे जिसने घर को लुटा दिया, उसको बुला दिया, तुम कैसे कलमा गो। मोमिनीन बिशीन बिशीन। लाजिम न था ये चरखे सितमगर के वास्ते, आबे फुरात शाम के लश्कर के वास्ते, यारो ख्याल बेकसी ये शह करो जरा, वो धूप दोपहर की वो सहराए करबला, वो लू वो खाक दश्त की वो गर्मी हवा, इस धूप में खड़ा है सुलेमान करबला। हुज्जत को खत्म करने को वो हुज्जते खुदा, आया हुजूर जालिमों से और यूं कहा, ऐ जालिमों कहो तुम्हें अब आरज़ू है क्या, ऐ जालिमों कहो तुम्हें अब आरज़ू है क्या, मजलूमियत से यूं शह मजलूम ने कहा। बतलाओ मैं सताता हूँ या तुम सताते हो, बतलाओ मैं सताता हूँ या तुम सताते हो, मैं तो दुआएं देता हूँ तुम दिल जलाते हो। मुझको नहीं रुलाते नबी को रुलाते हो, मुझको नबी रुलाते नबी को रुलाते हो, ये तीर फातिमा के जिगर पर लगाते हो। जब हम न होएंगे तो किसे तुम सताओगे, पानी किसे दिखा के जमीन पर बहाओगे। ये गर्दिश हो आले पैगंबर के वास्ते, और प्यासा इब्ने साकी ये कौसर के वास्ते। मजलूम कह रहा था कि मैं प्यासा प्यासा हूँ, मजलूम कह रहा था कि मैं प्यासा प्यासा हूँ, ऐ शिम्र तुझसे मांगता पानी जरा सा हूँ। दरिया भी रो दिया समंदर भी रो दिया, दरिया भी रो दिया
समंदर भी रो दिया, नाजुक गले को देख के खंजर भी रो दिया। चाहे अबरार कुजा शिमरे सितमगार कुजा, शहे अबरार कुजा शिमरे सितमगार कुजा, गर्दने शाह कुजा खंजरे बेपीर कुजा, सीना ए शबीर कुजा खंजरे खुखार कुजा, ज़ैना बेजार कुजा कूचा ओ बाजार कुचा, आले अतहार कुजा फिरकाए कुफार कुचा, सीलिए शिम्र कुजा शिलिए शिम्र कुजा, सकीना एजार कुजा, गुले जंजीर कुजा गुले जंजीर कुजा, आबिदे बीमार कुजा, अश्चय खलकाने जहाँ आदम व हवा व सुलेमान व ज़बीउल्लाह दे कुर्बान, दिगर यूसुफ किनान, दिगर खत्म रसूलान, शरीफान अमीरान, दिगर जिन्नो परियान, दिगर जन्नत व रिजवान, दिगर हुरा ओ गिलमान, हमा हाओ फिगानन, हमा नौहा कुनानन, हमा सीना जनानन, मनदनम चेकुनम, वाई हुसैनम हुसैन, वाई हुसैनम हुसैन, वाई हुसैनम हुसैन, वाई हुसैनम हुसैन, या हुसैन या हुसैन। या हुसैन 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 मिलके या हुसैन 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 हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन दी पनाह हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 मिलके बुलंद आवाज से या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन दी पनाह हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन माशाअल्लाह या हुसैन 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 तुझे झूला झुलाऊं मैं तुझे झूला झुलाऊं
तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। मिलके पढ़े माशाल्लाह। तुझे झूला झुलाऊं, माशाल्लाह जिए, हाय 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 तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूलाऊं, हाय हाय तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। मैं ख्वाब में असग़र तुझे, मैं ख्वाब में असग़र तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। मिलके माशाल्लाह। तुझे झूला झुलाऊं, माशाल्लाह, झूला झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, बेताब हूँ कब से तुझे, बेताब हूँ कब से तुझे सीने से लगाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला, बुलंद बुलंद, झूला झुलाऊं, तुझे मौला का पुरसा देना है बुलंद आवाज से माशाल्लाह। झूला झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला झुलाऊं, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, बरसात में तीरों की, बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला माशाल्लाह झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, झूला झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला झुलाऊं, मैं ख्वाब में असग़र तुझे, मैं ख्वाब में असग़र तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। मिलके हाय तुझे सोचा था तेरी सालगिरह घर में करूंगी, सोचा था तेरी सालगिरह घर में करूंगी, तकदीर ये कहती है, तकदीर ये कहती है तेरा सोग मनाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला। जी माशाल्लाह, आखिरी रातें मातम कीजिएगा इंशाल्लाह। झुलाऊं, हाय हाय तुझे झूला, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे बाबा से तेरा जनाजा ना उठेगा, बाबा से तेरा
जनाजा ना उठेगा, रुक जा जरा अब्बास को, रुक जा जरा अब्बास को, दरिया से बुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, है तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, है तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। अल्लामा 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 गुस्ताहों के हजूम में, गुस्ताहों के हजूम में ज़ैनब थी दरमियान। अल्लामा 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 अल्लामा। I know we're all tired, but think of Imam Hussain on that day. How tired was he after carrying all those bodies back? A few more minutes, inshallah. Put your energy tonight, tomorrow. That's it. For Imam Hussain, inshallah. Allama, Allama, Allama. हैरान हूँ बाजार से कैसे गुजर गई, हैरान हूँ बाजार से कैसे गुजर गई। तत्हीर की पली थी, तत्हीर की पली थी, बाजार का समा। अल्लामा 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 अल्लामा। क्या कहने माशाल्लाह। अल्लामा 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 अल्लामा। ये सोच के सजाद का दिल खून रो पड़ा, ये सोच के सजाद का दिल खून रो पड़ा। तफसीर बेरिदा थी, तफसीर बेरिदा थी, नेज़े पे था कुरान। अल्लामा 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 अल्लामा। जी माशाल्लाह। अल्लामा 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 अल्लामा। बुलंद माशाल्लाह। अल्लामा अल्लामा। कैसे उठाए लाश को मजलूम चल दिए, कैसे उठाए लाश को मजलूम चल दिए। तौकीर की ज़ईफ़ी, तौकीर की ज़ईफ़ी, अकबर सा नौजवान। अल्लामा 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 अल्लामा
Allama, 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 माशाल्लाह, बुलंद बुलंद Allama. Allama, बस एक आखिरी बाकी है बस. Allama, 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 Allama. हैरान हूँ बाजार से कैसे गुजर गई, हैरान हूँ बाजार से कैसे गुजर गई, है तत्हीर की पली थी, तत्हीर की पली थी, बाजार का सामान. अल्लामा, 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 अल्लामा. या हुसैन, 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 या हुसैन. जज़ाकल्लाह. बर मुहम्मद व आली मुहम्मद सलावत. As per yesterday, inshallah, we will finish with a dua. Again, asking to go to those holy lands, because what bigger destiny, what bigger dream do we have as the Shia of Amir al-Mu'mineen? Inshallah, we pray together. Kareem Karbala, मौजिज़ा दिखा दीजिए, करबला याद बहुत आती है, बुला लीजिए. With all your hearts, loudest voice inshallah. करीम करबला, मौजिज़ा दिखा दी, करबला याद बहुत आती है, बुला लीजिए. करीम करबो हुसैन आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, तड़प रहा है बहुत कर बला की याद में दिल, तड़प रहा है बहुत कर बला की याद में दिल. Raise your hands inshallah. फिर एक बार मुझे करबला दिखा दीजिए, करबला याद बहुत आती है, बुला लीजिए. बुलंद आवाज़ से इंशाअल्लाह. करीम करबला, मौजिज़ा दिखा दीजिए, करबला याद बहुत आती है, बुला लीजिए. करीम कर तुम्हारे रोज़े पे आने में आज दिक्कत है. So last verse inshallah from your hearts. मगर खबर है तुम्हें मुझको कितनी चाहत है. We're telling Mawla, मगर खबर है तुम्हें मुझको कितनी चाहत है. मैं सर के बल चलाऊंगा, बस सदा दीजिए, करबला याद बहुत आती है, बुला लीजिए. For the last time inshallah, with your loudest voice for the acceptance of the dua. करीम करबला,
मौजिज़ा दिखा दीजिए करबला याद बहुत आती है बुला लीजिए करीम Karbala. For the acceptance of that dua, inshallah, and all our amal across the last few nights and the nights coming. A loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرذية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأذالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية غاضبة. ولعن الله ابن مرجانة. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم.
وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم الناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاريكم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رذيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. Please go to sujood. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي
اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولاه. السلام عليك يا قريب القربى. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان. سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجر الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته. الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Mu'minin Salatul Maghrib end time is due. Mu'minin after Salatul Maghrib and recitation of the Ayat Warisa and tea and tabarruk will be served outside. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه